Now, the Congress is preparing for a mega show of strength in the national capital tomorrow when the party MP Rahul Gandhi will be appearing before the Enforcement Directorate in connection with a money laundering case pertaining to the National Herald AJL deal. The party plans to take out a march to the ED office in a show of support for Rahul Gandhi when he appears before the agency. The party's state units have also been asked to stage a dharna at 25 places, including 12 ED offices across the country, to put up the show of strength, throwing their weight behind Rahul Gandhi. Congress has now asked all its national spokespersons as well to address the media from various locations. Congress also already asked its MPs, CWC members to reach the party headquarters when Rahul is scheduled to appear before the central agency. The BJP, meanwhile, slamming the Congress, saying that the Gandhis should not fear if they are really innocent. Rahul Gandhi and Sonia Gandhi have been summoned by the ED in a money laundering case. Sonia Gandhi has been asked to appear before the Enforcement Directorate on Wednesday, but she sought more time from the probe agency as she is still recovering from COVID. In the latest, she's been admitted to the Gangaram Hospital in Delhi. राहुल जी को और सोनिया जी को किस बात का डर है? क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों दबाव बनाना चाहते हैं? क्यों इतना डर पैदा हो रहा है कि ईडी के सामने आने के लिए? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो छिपाने का क्या है? और अगर गलत किया तो हिसाब देना ही चाहिए। आखिरकार देश के लिए कानून एक बराबर है। किसी एक परिवार, एक पार्टी, एक व्यक्ति के लिए कानून अलग नहीं हो सकता। ये कार्रवाई हो रही है और इसके चलते उनको अपने बयान दर्ज भी कराने चाहिए और देश के सामने सच्चाई भी आनी चाहिए। आज दोनों मां बेटे जो बेल पे बाहर हैं, आज वो यहां ड्रामा कर रहे हैं। आज राहुल जी, आप अपने एमपीज को इकट्ठा कर रहे हैं। आप सत्याग्रह, ये सत्याग्रह के नाम पे बदनामी है। महात्मा गांधी, बापू, पूज्य बापू जहां भी देख रहे होंगे, आज उनके आत्मा को भी तकलीफ हो रही होगी कि ये जो नकली गांधी हैं, ये किस प्रकार से नकली सत्याग्रह करके मुझे अपमानित कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। व्हाई दिस ड्रामा ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेजेंट योरसेल्फ टुमारो इन फ्रंट ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड टेल द ट्रुथ। एक्सेप्ट दैट यू हैव लूटेड दिस कंट्री वर्थ 5,000 करोड़। कल सुबह राहुल गांधी जी उस समन के जवाब में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि देश में हर एजेंसी की स्वतंत्रता निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा हम सब मानस रखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान डालेंगे, पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया हो। जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल और खास तौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जवाबदेही तय करता है, तब इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग कर आवाज को दबाने का काम किया जाता है। बीजेपी नेता या किसी दूसरे बीजेपी नेता पे कभी ईडी नहीं होता। तो इस प्रकार का एक रुपया एक चेहरा जो ईडी है, ये साफ साफ ये प्रकाश करता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, राजनीतिक निर्देश दिया गया है और राजनीतिक उद्देश्य से आज गांधी परिवार के सदस्यों पे ईडी का नोटिस आया है। Let me quickly cut across to Kamaljeet Sandhu joining us live for more on that. Kamaljeet, here is the Congress planning a massive show of strength on the day that he has to be appearing, Rahul Gandhi has to be appearing on that ED summons. You know, the question that the BJP asks is, if you aren't guilty, then what's to worry? Why this show of strength? What's the Congress really thinking while it attempts some huge protests on the day he has to appear? Well, what we're looking at is massive protests across the country, especially in front of the ED office, while Rahul Gandhi walks in at around 9:30 in the morning. We don't know how many hours of questioning that would be. But yes, this is expected to be a huge political spectacle of sorts, with the Congress doing a show of strength. So we know whether it's Gujarat or whether it's Delhi, we will see Congress workers come out in strength to protest against what they call as a political vendetta. Now, the BJP
BJP has sharpened its attack on Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, saying if they have nothing to hide, why should they do all this? Meanwhile, we've seen how Congress has reacted, saying the agencies are being used, are being manipulated, especially to attack opposition leaders and voices of Rahul and Sonia Gandhi, because they have been speaking and questioning the government. So at this point of time, 2 years before 2024, a massive showdown on the issue of the National Herald case, a case which pertains to the 2012 and the AJL, the publishing house. That is where the acquisition is under scanner by the ED, and the questions and statements of both the leaders. And we know that Sonia Gandhi is admitted in the Gangaram hospital. She's been indisposed. COVID-related issues, we've been told, is the case. But clearly, as far as Rahul Gandhi is concerned, he is expected to appear tomorrow in the morning. So yes, even though he will be appearing before the agency, what is anticipated is a big political boil-over, as well as a spectacle of sorts as far as the Congress party is concerned. Meanwhile, it's the opposition versus Congress party, and a bigger tutu meme is anticipated over the next few days.